Okay, you ready? Yes. Okay. This is a little bit too loud because you're getting feedback. So you want to translate? We're going to do translation on this, or we just... They need it. Okay. All right. So, Om Gana Timirandasya Gananjana Shalakaya Chakshur Urmiritam Yena Tasmai Shigurve Namaha. I offer my respectful obeisances unto the lotus feet of my spiritual master, His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, who so kindly opened my eyes with the torchlight of knowledge. गुरु महाराज अपने गुरु श्रील प्रभुपाद जी का नमस्कार कर रहे हैं और उनको अपना बताया गया है कोटि कोटि दंडवत दे रहे हैं कि उसने गुरु महाराज जी का ज्ञान के चक्षु से उनके नेत्रों को खोला और उदय दृष्टि के द्वारा आज वो भक्ति के मार्ग में. So today we are celebrating Vaishnava Diksha, specifically Harinam initiation. आज जो दीक्षा है दीक्षा समारोह है हरिनाम दीक्षा समारोह है. So what is Harinam? Harinam is, of course, the chanting of the Lord's holy names, non-different from Krishna. हरिनाम क्या है? वो भगवान के नाम का जप है जो कृष्ण भगवान से कोई भिन्न नहीं है. Namachintamani Krishnas Chaitanya Rasa Vigraha Purashura Nityamukto Vinadvama Namanamino. So the holy name of Krishna is a Chintamani jewel. कृष्ण भगवान का जो नाम है वो स्वयं एक चिंतामणि की तरह है. It is non-different from Krishna. कृष्ण जी से कोई भिन्न नहीं है. It is pure. It is complete. Everything is there in Krishna's name. पवित्र है, पूर्ण है. भगवान के नाम में सब कुछ भरा है. And so when we chant Krishna's name, Krishna is with us. जैसे हम कृष्ण जी के नाम जप करने लगते हैं, कृष्ण भगवान हम लोग के साथ में हो जाते हैं. So what is the advantage of chanting Krishna's name? क्या भलाई है भगवान के नाम जप करने? The advantage is that we become, first of all, free from all the distresses of this world. पहला भलाई है कि हम सभी चिंताओं से मुक्त हो जाएंगे. Our life becomes auspicious. हमारा जीवन मंगलदायी हो जाता है. We achieve transcendental happiness. दिव्य आनंद की अनुभूति होता है. And in the end of this life, instead of going to Yamaraj, we go back to the spiritual world. गुरु महाराज कह रहे हैं और आखिरी में आप यमराज की जगह भगवान के दिव्य लोक चले जाओगे. So there's a lot of benefits to chanting the Lord's holy names. सभी तौर से कल्याणकारी है भगवान के नाम जाप करना. You're free from karma by chanting Krishna's name. सभी कर्म के बंधन से आप मुक्त हो जाएंगे कृष्ण भगवान के नाम जप करने से. I mean, whatever is your past samskara, it doesn't matter. Because by this Harinam samskara, everything, all the bad stuff in the past has been eradicated. आपका जो भी संस्कार आप लेकर आए हो उससे कोई ताल्लुकात नहीं. जैसे भगवान के नाम जप हुआ ये तुरंत उन सब को हटा देगा. But you have to continue to chant. लेकिन गुरु महाराज कह रहे हैं आपको निरंतर जप करना पड़ेगा. So therefore we have this samskara, this fire sacrifice in front of Krishna and the Vaishnavas and Srila Prabhupada. तभी ये यज्ञ आज होने जा रहा है. भगवान राधा विद्यावन चंद्र के आगे, गुरुदेव के आगे, श्रील प्रभुपाद के आगे, सब वैष्णव के आगे. So you can make some promises. और आप कुछ प्रतिज्ञा लेंगे. And so this is not only an ordinary promise, this is what's called a vrata or a vow. ये कोई साधारण बताया गया है प्रतिज्ञा नहीं, ये एक व्रत है जो आप लोग लेंगे. And you have to consider this vow as important as the vow made by grandfather Bhishma or any of these great devotees. और ये ऐसा व्रत है जैसे भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा लिया था अपने जीवन में. Krishna makes a vow too. He says, Konteya, my devotee will never perish. Pratajanihi name bhakta pranashyate. कृष्ण भगवान भी
व्रत लिए है कि मैं अपने भक्त को कभी नाश नहीं होने दूंगा। So, if you remain Krishna's devotee, chanting his names, you will never perish. अगर आप कृष्ण भगवान के नाम में सजग करेंगे, आपको कभी विनाश होगा ही नहीं। But if you don't remain, then you'll perish. लेकिन अगर आप उस व्रत पर नहीं रहोगे, आप अपने विनाश हो जाओगे। Ashradana purusha dharmashasha paramtapa aprapyamam nivardante mritu samsara vardmani. So one who doesn't complete his vows or have faith, he returns to repeated birth and death in this world. आप श्रद्धापूर्वक जो कसम गुरु महाराज के आगे लेंगे, अगर नहीं निभाओगे तो आपको वापस 84 लाख योनि में आना ही पड़ेगा। So on behalf of Krishna and Srila Prabhupada, I'm promising you eternal life full of bliss and knowledge. That's a guarantee. गुरु महाराज कह रहे हैं, कृष्ण भगवान के और प्रभुपाद के मैं प्रतिनिधि बनकर आप लोग के वचन दे रहा हूँ कि आप लोग के गोलोक धाम एकदम निश्चय। And it's a contract between you, me, Krishna, and Prabhupada. और आज एक संबंध है भगवान कृष्ण, श्रील प्रभुपाद, गुरुदेव के आगे और आपके साथ। And it's described that if you don't become completely Krishna conscious in this life, but you continue, then Krishna and the Guru will come for you and bring you back to Krishna consciousness. तो अगर आप कृष्ण भावना में पूरा रूप से नहीं डूब पाओगे, तब श्रील गुरुदेव कहते हैं हमें आना पड़ेगा, प्रभुपाद जी को हमें आना पड़ेगा आपको डुबाने के लिए। So, swapamapyasha dharmasya trayate mahatobhaya. Even if you just make a little advancement in this lifetime, it saves you from the most dangerous type of fear. That is becoming an animal in the next life or going to Yamaraj. भगवान के भक्ति में थोड़ा सा भी प्रगति करोगे, आप बड़ा भयानक मुसीबत से बच जाओगे, जानवर की योनि से बच जाओगे और आपको प्रगति हो जाएगी। Krishna will always come to rescue you. कृष्ण भगवान आएंगे आपको बचाने के लिए। Just like the story of Bilvamangal Thakur. गुरु महाराज बिल्वामंगल ठाकुर की कथा बता रहे हैं। Bilvamangal Thakur was a great devotee, but he deviated from Krishna consciousness for some time. बिल्वामंगल ठाकुर बहुत महान भक्त रहा, लेकिन कुछ देर के लिए वो भगवान से अलग हो गया, विमुख हो गया। He became addicted to a prostitute. वो क्या हुआ, एक वैश्य के साथ आकर्षित हो गया। And what happened is that one day when he was going to see the prostitute, it was a lot of thunder, a cyclone. He had to cross a river, grab hold of a dead body to cross the river. और क्या हुआ, उस वैश्य से मिलने के उस दिन बहुत भयानक तूफान आया था, बाढ़ चढ़ गया था, एक बॉडी बहत रहा, बॉडी के ऊपर चढ़ के उधर पहुंच गए, सांप पकड़ के भी ऊपर घर में चढ़ गए। He had to grab hold of a snake, he didn't know it was a snake, to cross over the wall to see this prostitute. एक भयानक दीवार था, गुरुदेव कह रहे कि उसके ऊपर चढ़ी और एक ऊपर से सांप लटक रहा है, उसको मालूम नहीं था, सांप पकड़ के भी चढ़ गए। And when he knocked on her door, she was so surprised to see him, she said, Bilvamangal, if you had so much devotion for Krishna, you'd be a pure devotee now. तो बोलने का प्रयास गुरुदेव कह रहे, जैसे खटखटाया और उसकी पत्नी ने स्थिति देखा, यही रकम आकर्षक, अगर आप भगवान के राह पे जीवन धन्य हो जाए। So he immediately took sannyas वही वचन से तुरंत वो संन्यास ले लिया। and became such a great devotee that his writings after he went to Vrindavan are famous for all the Vaishnavas to read. और तुरंत वो वृंदावन में आकर ऐसा ऐसा भगवान के प्रति जो लिखा है वो एकदम विख्यात हो गया पूरे ब्रज में। So the point is that his spiritual master utilized this prostitute to give him an instruction. उनका गुरु जो था वैश्य को इस्तेमाल किया ताकि ये भगवान की भक्ति में डूब जाए। So you should remain strict in Krishna consciousness so that I do not have to use a prostitute to talk to you. गुरु महाराज के आप लोग निष्ठा पूर्वक कृष्ण भावना में रहना ताकि मुझे कोई वैश्य नहीं मुझे कोई आपके पास। I don't have to use a bartender to talk to you. मुझे कोई जो दारू बेचने वाला उसके नहीं भेजे पड़े आपके क्या पे समझाओ। I don't have to use a kava seller to talk to you. जो
ना भेजिए, बोले उसके नहीं भेजेगा कि तो मैं समझाऊं। Make it easy for me. इसके भक्ति के मार्ग में सरल दो। So, yes, so be strict in Krishna consciousness, and then if you are strict in this lifetime, it is guaranteed that you will go back to home, back to Godhead. अगर आप निष्ठापूर्वक ये कृष्ण भगवान के पकड़ोगे, गुरु महाराज कह रहे हैं, निश्चय आप गोलोक धाम के निवासी बनोगे। And that guarantee is given by His Divine Grace Srila Prabhupada. और ये आश्वासन श्रील प्रभुपाद के द्वारा है। And Krishna is controlled by his pure devotees like Srila Prabhupada. और कृष्ण भगवान जो है वो पवित्र भक्त के द्वारा वो उनके हृदय में केंद्रित है, जैसे श्रील प्रभुपाद जी ने केंद्रित किया। Sometimes Krishna changes his mind or lies. कभी-कभी कृष्ण भगवान अपना मन बदल देता है। Just like Krishna promised not to fight in the battle of Kurukshetra. कृष्ण भगवान ने कसम खाया था, कुरुक्षेत्र के मैदान में मैं कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। Yet to protect Arjuna, he broke his promise. लेकिन अपन भक्त अर्जुन के बचाने के लिए बाहर में गया कसम। That's why when Krishna said, Kontaya pratijanihi name bhakti pranashyati, he asked Arjuna to declare it, because if Arjuna declared it, then Krishna would be duty bound to complete that promise. तभी भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन तुम कसम खा दो कि कृष्ण अपने भक्तों को नाश नहीं करने देगा, तब मैं उसके निभाऊंगा, क्योंकि मैंने तो बहुत बार तोड़ दिया। So Prabhupada has declared it. Prabhupada is a pure devotee. He came down from the spiritual world, a Nityasiddha devotee, eternal associate of Krishna, and he has given that promise to us. तो श्रील प्रभुपाद जी भगवान के पवित्र भक्त थे। जैसे अर्जुन ने कसम खाई, ऐसे प्रभुपाद जी जब बोल दिए तो इसका मतलब है वो गोलोक से आया और हमें आश्वासन दे रहे धाम जाने की। So don't deviate from your promises. अपनी ये जो कसम है इससे आप कभी विमुख नहीं होंगे। So basically you're just promising the chant. It's very easy. Chant 16 rounds and follow the four regulated principles. बहुत सरल है, 16 वाला ही करना है, 4 जो नियम पाप है उसको नहीं करना। No meat, fish, or eggs, no intoxication, and no gambling, no illicit sex. Very simple. एकदम सरल, मांस मदिरा नहीं, शराब नहीं, और स्त्री स्तन पुरुष नहीं, और तरह क्या है शराब नहीं। And you can do this by always remembering your goal of being Krishna conscious and pleasing Prabhupada, pleasing your spiritual master, pleasing Krishna. अपने लक्ष्य पर हमेशा ध्यान करना, हमेशा अपने गुरु को, प्रभुपाद जी को, श्री कृष्ण भगवान को हमेशा उसको खुश देना, उसे आनंदित कर देना। It's a process of bhakti. It's not a process of karma or jnana. ये भक्ति का मार्ग है, ये कर्म का नहीं, ज्ञान का नहीं। So if you want to quickly advance, you have to do your activities out of a sense or in a sense of trying to please Krishna and Guru. तो हमारा लक्ष्य है कि सब तौर से भगवान को प्रसन्न करना, गुरु को प्रसन्न करना, श्रील प्रभुपाद को प्रसन्न करना। So your speed of advancement in Krishna consciousness is dependent on you. आप कृष्ण भक्ति में कितनी प्रगति करेंगे आपके ऊपर निर्भर है। So one thing we always speak about at initiation, which helps you advance more quickly, is avoiding the 10 offenses on chanting. गुरु महाराज कह रहे हैं कि दीक्षा समारोह में ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम 10 नाम अपराध करें। Okay, I'm going to mention these 10 offenses. First offense is to blaspheme the devotees who have dedicated their lives to propagating the holy name of the Lord. पहला नाम अपराध, जो भक्त अपना जीवन प्रचार में लगाया है, उसके निंदा कर रहे हैं। So if you really want to make advancement, you serve the devotees. You praise the devotees who have dedicated their lives. जो पूरा जीवन प्रचार में निकाला है, उसकी निंदा की जगह तुम उसकी मदद करो, उसकी सेवा पहुंचाओ करो। Just like in ISKCON, we are all serving His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. जैसे हमारे ISKCON में हम सब लोग श्रील प्रभुपाद जी के सहयोग दे रहे हैं। Whoever you're initiated by, Prabhupada is always the central point of service. आप किसी भी चाहे दीक्षा ले लो, लेकिन श्रील प्रभुपाद वही प्रमुख है। And it's Prabhupada's mission
And by serving Prabhupada's mission, we can save the whole world. और ये प्रभुपाद जी के मिशन है और ये मिशन में आप आ जाओगे हम पूरी दुनिया को बचा लेंगे. And also because you are serving Prabhupada's mission, you're a representative of Prabhupada's mission. और आप ये मिशन के भीतर हो तो आप प्रभुपाद के प्रतिनिधि हो. People will judge the Krishna consciousness movement and Prabhupada's mission by your actions. बताया गया है दुनिया वाले प्रभुपाद को कैसे पहचानेंगे तुम्हारा आचरण से. If you act in an unethical way or an immoral way, then people will judge our movement badly. और आप अनुचित कार्य से व्यवहार करते हो तो लोग क्या देखेंगे क्या समझेंगे हमारे बारे में. If someone sees you drinking kava, for example, शिलगुरुदेव कह रहे हैं कोई आप लोग के देखिए नमूना पीते then people will criticize not only you, but the movement. वो खाली आपको निरादर नहीं करेंगे ये संस्था को भी निरादर करेंगे. So you have a very big responsibility now, बहुत बड़ा जिम्मेवारी आप सबको. not just for yourself, but for the whole world. खाली अपने आप के नहीं पूरा दुनिया को कल्याण करने के लिए आप सबको. So the second offense on chanting is to consider the names of the demigods like Lord Shiva and Brahma to be equal to or independent of the holy name of Lord Vishnu. शिव ब्रह्मा देवताओं को भगवान श्री कृष्ण विष्णु भगवान के समान मानना ये बहुत बड़ा अपराध है. Actually, we respect, honor, and serve the demigods like Lord Shiva, Brahma, Ganesh, and Chandi. All these different demigods we respect and honor as servants of Krishna. जितनी ये देवी देवताओं का जानते हो ब्रह्मा चंडी शिवा ब्रह्मा हमको पूरी इज्जत देते हैं लेकिन कौन भाव से ये सब भगवान के सेवक हैं. If we treat them as God, the ultimate God, Parameshvara, they get upset with us. और उनके जब हम एकदम परमेश्वर मानेंगे तब वही लोग आपके ऊपर नाराज हो जाएंगे. Just like one time, there were a bunch of dacoits who were worshipping Durga, Kalima, and they were going to offer a devotee. और गुरु महाराज कह रहे हैं एक बार दुर्गा मैया काली माँ के पास बताया गया है चोर लोग ने भक्त को लाया बलि देने. They were getting ready to cut the devotee's head off and offer the devotee to और Kali. भक्त के गटे ही काटने जा रहा था काली माँ के आगे. And Kalima came out of the deity and killed them all, and all of her associates cut off the heads of all the dacoits. तुरंत काली माँ ने मूर्ति में से निकला अपना खंजर लेकर अपनी पुजारियों के सबके गटे काटे. And they were drinking the blood of all these dacoits. और क्या हुआ यही अपने पुजारियों के जो लहू बह रहा था वही पीने लगे. Of course, I don't think that you're going to offer devotees as a sacrifice to Kali, but Kali will be very angry if you don't offer her Vishnu Prasad. काली माँ गुरु महाराज के मैं जानता हूँ आप लोग के भक्ति तो बलि नहीं देगी लेकिन काली माँ गुस्सा लगी अगर तुम कृष्ण भगवान के प्रसाद उसको नहीं दिए. And if she comes out and cuts your neck off, don't blame me. और निकल के आपके इक्के गटे उड़ा देगी जब आप गुरु महाराज की कुछ नहीं बोलना. So, and then the third offense is to blaspheme, is to disobey the order of the spiritual master. और तीसरा कि गुरु की अवज्ञा करना. So the spiritual master is very kind, hopefully, and he gives instructions according to the psychophysical nature of the disciple. हर गुरुदेव हर प्राणी हर भक्त के स्वभाव देखकर उसी तरह ज्ञान देते हैं. We should have faith that the spiritual master knows enough to give us good instructions. उनके जो ज्ञान है उन पर पूरा विश्वास होना चाहिए. वो जो संदेश में दे रहे हैं उस पर निष्ठा होना चाहिए. Of course, there are Siksha gurus and Diksha gurus, so both of these should be followed strictly. शिक्षा गुरु भी रहता है दीक्षा गुरु भी रहता है दोनों को आप इज्जत देते हुए उनकी बात सुनो. The next offense to be avoided is to blaspheme the Vedic literatures or any literatures which have the same purport. कोई भी शास्त्रों का खंडन आप कदाचित कभी नहीं करेंगे. Instead, we should glorify any literature which advocates
the worship of God and the ultimate point of bhakti. गुरुदेव कह रहे हैं कि आप शास्त्र जो भगवान की यश कीर्ति कर रहे हैं उनकी बड़ाई करो, प्रशंसा करो. So next offense is to consider the glories of chanting Hare Krishna to be imagination. और उसके बाद में कि भगवत नाम को एक काल्पनिक समझना. It's not imagination. Krishna is directly there, and I've experienced that. I've been chanting Hare Krishna for 54 or 55 years. गुरु नहीं, मैं स्वयं 55 साल से मैं जप कर रहा हूँ, मैं स्वयं अनुभव किया हूँ कृष्ण. And it gets better every day. और दिन प्रतिदिन बहुत अच्छा हो रहे हैं, अनुभूति अच्छा हो रहे हैं. If you chant some material sound, it gets worse every day. और आप लोग जब फिल्म लगाना सीख के बैठे हैं, रोज के रोज बर्बाद होते जा रहे हैं. Just like you can chant Lambasa, 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 it gets worse by about half a minute. जैसे गुरुदेव कह रहे हैं, आप चिल्लाइए लंबासा 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 गो लंबासा तब रोज बर्बाद हो जाए. It's boring. वो थोड़ी देर बाद नहीं मजा. So Krishna's name gets, because the name Krishna means basically to attract one and to give one bliss, Ananda. Krishna Ananda. कृष्णा जो है, कृष्ण नंदा गुरु महाराज कह रहे हैं कि वो तुम्हें आकर्षित करेगा तो तुम्हें दिव्य आनंद देगा. So the next offense is to give some crazy interpretation of the holy name of the Lord. और दूसरा नाम अपराध है कि नाम में अपना अर्थवाद करना. And so the real meaning is Krishna means the Supreme Personality of Godhead, and as we said before, Krish means to attract, and Nanda means to be blissful. अपना अर्थवाद ना डालना उसमें. कृष्ण के मतलब है कृष्ण आकर्षित करता है, आनंद कृष्ण नंद मतलब, और तुम्हें जो दिव्य आनंद देता है उसका नाम है कृष्ण. And Krishna is dancing on your tongue. He's dancing in your heart when you chant. जब आप जप करोगे, आप अनुभूति करोगे कृष्ण भगवान मेरे जिह्वा पर, मेरे हृदय में नृत्य कर रहा है. And anyway, so there's so much happiness from chanting Hare Krishna. गुरु महाराज कह रहे हैं बहुत दिव्य आनंद है भगवान के नाम जप में. When a pure devotee hears the chanting Gauranga Balite Habi Pulaka Savir, he feels the hairs of his body stand on end. गुरु महाराज कह रहे हैं जैसे भक्त भगवान का नाम लेते गौरंग महाप्रभु का, उसका रोआं पुलकिमान हो जाता है. Tears come from his eyes like torrents of rain. और आँखों में से आंसू की धारा बहने लगता है. Okay, the next offense to be avoided is to commit sinful activities thinking you're going to get away with them because you're chanting Hare Krishna. सत्वनाम अपराध है भगवत नाम के जप पर पाप कर्म करते हैं. ऐसे सोचो कि नाम तो जप करो मिट जाएगा. So don't commit sinful activities, and don't think the chanting will help you get rid of that karma. It won't. आप पाप करते हो, सोच रहे हो नाम में जप कर रहा हूँ, कट जाएगा, कदाचित नहीं होगा. Right now, you're taking initiation, you're becoming free from karma, you're chanting the holy names, you're becoming free from karma, but don't do anything else. Don't create more bad karma. गुरु महाराज कह रहे हैं आज आप दीक्षा जो ले रहे हो, सभी पापों से कर्मों से आप मुक्त हो जाओगे, लेकिन सतर्क सावधान, इसके बाद में अनुचित कार्य नहीं करना. You will be held responsible. आप उसकी जिम्मेवारी फिर आपको लेना पड़ेगा. So next offense is to consider the chanting like a ritual, like the karma kanja rituals in the Vedas. और अठवाना अपराध है कि भगवत नाम में को एक वेदों में शुभ सकाम कर्म कांड के समान समझें. We have many rituals that we do, and these help us remember Krishna, but they should never be compared to the chanting. ये जो कर्म कांड का है ठीक है, ये हमें उठाना चाहिए. Even in Krishna consciousness, we have different rituals, like the style of clothes that we wear is a ritual. But the real point is the chanting. You can dress any way nicely you want, but please chant. कृष्ण भावना में भी कई रिचुअल्स है. जैसे हम लोग पहनते हैं कपड़ा वस्त्र पहनते हैं, जैसे पहने मन को पहनो, खाली अच्छा होना चाहिए, लेकिन लक्ष्य क्या है? वो नाम जप करना. So, next offense is to preach the glories of the Lord to those who are faithless.
बता दें कि नास्तिक व्यक्ति को भगवत नाम नहीं ना बतलाना. So instead, we want to preach to everybody, but we have to understand how much to give to certain people. That is discretion. नवा नाम अपराध गुरु महाराज कह रहे हैं कि नास्तिक व्यक्ति को भगवत नाम नहीं देना, उतने देना, अपनी बुद्धि इस्तेमाल करो कि कितना सकेले बस उतने ही देना. If we're preaching to drunk people, for example, we don't tell them about the gopis. एक नशेड़ी को अगर तुम प्रचार कर रहे हो तो उसकी गोपी के बारे में बता रहे हो. We just tell them, chant Hare Krishna and you'll be happy. That's all we need to tell them. हरि बताओ नाम जप करो खुशी खुशी रहियो. So, be careful. So, next offense is to not have complete faith in the holy name and maintain material attachments. भौतिक आसक्त बनाए रखना, तो ध्यानपूर्वक जप न करना, ये बड़ा अपराध है. So these material attachments cause us pain. आप जितना संसार के साथ धसे हो ना, यही तुम्हें दुख देगी और कोई दुख नहीं देगी. This material world is a world of suffering, adhyatmic, adhibodic, adhidaivic miseries. ये संसार एक दुखालय है, अधिदैविक, अधिभौतिक और अधिआध्यात्मिक. ये दुख है तीन हमारे ऊपर जो है. And so, the more we're attached, the more we suffer. जितना शक्ति धरोगे, उतना दुखी रहोगे. So gradually we should be attempting to give up these attachments. धीरे धीरे छोड़ दो. That doesn't mean that you all take sannyas. I'm not suggesting that. मुझे इसके मतलब नहीं बोले कि छोड़ के सन्यास से आ जाओ. Our method of giving up attachments is called yukta vairagya. इन सबको धीरे धीरे त्याग करने के मतलब युक्त वैराग्य गुरु महाराज का. That means we accept things, understanding Krishna is the owner of everything, and we use those things in Krishna's service. मतलब युक्त वैराग्य कि कृष्ण भगवान ही संपूर्ण मालिक है सब चीज का, और मैं उसका मालिक नहीं हूँ, लेकिन सब कुछ उसके लिए सहयोग में कार्य में लगा हूँ. That way you transform your attachments into something spiritual attachments. तो जो अशक्ति था, अब वो तुम्हारा विचारधारा ने बदली कर भगवान के लगा दिया वो शक्ति. Just like you may have children, so be attached to giving them Krishna. जैसे आपके पास बेटा बेटियां हैं, आप उनके साथ अशक्ति धन रहे हो, लेकिन वो बेटा बेटी को कृष्ण के पास लाओ ना, उसको भक्त बना दो. Lord Rishabhadev says you shouldn't even become a mother or father or guru or anybody who has a position unless you're capable of freeing your dependence from the cycle of birth and death. बताया गया है भगवान का अवतार ऋषभ देव ने कहा है कि आप गुरु न बनो, आप पिता न बनो, जननी माँ न बनो, देवता भी नहीं बनो, अगर तुम अपने को जन्म मृत्यु से तार नहीं कर सकते. So it's all right. Be attached to your children for the right reason. अपने बेटाओं के प्रति आसक्ति धरो, लेकिन उनके साथ में कृष्ण भावना का लक्ष्य धरो. Be attached to your wife for the right reason. अपनी बीवी के साथ भी आसक्त धरो, लेकिन कृष्ण भावना बिल्कुल लेकर. Be attached to your car for the right reason. आपके पास मोटर है तो वो मोटर को आप सागर में नहीं डुबा देना, उसकी कृष्ण भावना में लगाओ. Be attached to your business for the right reason. आपके पास धंधा है तो कृष्ण भावना में लगा दो, दान नहीं कर देना कोई भी. Do it all nicely for Krishna. सब कुछ जो है अच्छी तरह से कृष्ण भावना में लगाओ. Okay. So, and then also, Bhaktivinoda Thakur says it's offensive to be inattentive while chanting. भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं बड़ा सख्त रख, यानी कि जैसे लोग लापरवाही दिखा लगे जपने, सब वहाँ से बिगड़ जाएंगे. How can we be attentive while we're chanting? Because the mind wanders. We have to focus on our love for Krishna and our goals. तो कैसे ध्यानपूर्वक जप करें, लक्ष्य नहीं भूलना कि मैं क्यों जप कर रहा हूँ, मुझे तो कृष्ण प्रेम चाहिए, मुझे इसके प्रेम में डूबना है. When you start to chant, think of why you were chanting. Do a sankalpa. Why am I chanting? What's the reason? What am I hoping to get from this chanting? And then you will be focused. जप करने से पहले एक संकल्प लो, मैं क्यों जप कर रहा हूँ, मुझे क्या मिलेगा, ये सब पहले सोच लो, तब शुरू करना, तब आपको वही मिल जाएगा. Okay? And then, apart from the 10 offenses, study Lord Chaitanya Mahaprabhu's 8 prayers called the Shikshashtaka. साथ-साथ में चैतन्य महाप्रभु को गुरु महाराज कह रहे हैं जो 8 विशेष श्लोक में देकर गए, इसको रोज पढ़ना. And then you will understand the right move to be chanting.
और तब सही विचार भी होना चाहिए जप करने में। Prabhupada would often say that one should chant like a little child crying out for his mother. श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि कैसे जप करना चाहिए जैसे छोटा बच्चा अपनी माँ के लिए रो रहा है। Ainanu tanuja kinkaram patita mam vishameva mam buddha kripaya tava pada pankaja stita duli sadrasam vajintaya. O son of Nanda Maharaj, I'm your eternal servant, but somehow or other I've fallen down to this horrible ocean of birth and death. Save me, fix me up as one of the atoms or specks of dust at your lotus feet. और ये भावना धरो जब करने से पहले, हे नंद के बेटा, हे कृष्ण भगवान, मैं जन्म और मरण के सागर में गिर गया हूँ, आप मुझे कृपया उठाइए, एक धूली बनाकर अपने चरणों में धर लीजिए। ऐसा भावना लेकर तब आप जप करें। Save me, Krishna. We don't realize right now we are drowning in the ocean of material existence. हे कृष्ण मुझे बचाओ, मैं जन्म मृत्यु के भाव सागर में डूब रहा हूँ। Krishna for sure will come and take you away. तो जब इस भावना आ जाए तो भगवान तुरंत आके आपकी बचा ले। That's my experience. ये गुरुदेव का अनुभव है जो आपके आगे प्रस्तुत करते हैं। But oftentimes we forget how painful this world is. लेकिन लोग बार-बार भूल जाते हैं ये संसार कितना दुखालमय है। Krishna will send us reminders though. तो भगवान कृष्ण आपके चेतावनी देंगे। Just like a year and a half ago, Krishna sent me kidney stone pain. गुरु महाराज ने कृष्ण भगवान मुझे चेतावनी दिया, बोले पत्थर हमारी किडनी में है। All I could do was all night long just chant Krishna, Krishna, Krishna. गुरु महाराज कहते पूरा रात भर में एक ही चीज करना, कृष्णा कृष्णा कृष्णा। For several days, no sleeping, no eating, just chanting Krishna, Krishna, Krishna. कितना दिन तक ना कुछ खाया ना पिया, कले के जी कृष्णा कृष्णा कृष्णा। And I was in ecstasy even though I was in pain. और भले वो पीड़ा रहा, लेकिन मैं कृष्ण के नाम ले रहा तो मैं दिव्य आनंद में भी रहा। So you should try that. आप लोग भी ट्राई करें। When anything happens that's unpleasant, you just take a walk and chant Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. And then you will go to the spiritual world right then and there. जब आपके वो सुखदायक नहीं लगता है, तो आप तुरंत एक काम करो, वहाँ से निकलो और भगवान के नाम प्रेम से जपो। गुरु महाराज कह रहे ये आपको दिव्यलोक ले जाए। So that's initiation, and now we'll proceed with the name giving. ये initiation है, आप गुरु महाराज जो नामकरण है, नाम देने जा रहे, दिव्य नाम दिया जाएंगे, तो एक-एक बताएंगे, उठ के जाएंगे। And so everyone should come up. And the first person should be Yogesh Warchand. Shailesh is the next one. And so the process, you can explain the process. They have to offer obeisance to Prabhupada, the deities, and myself. गुरु महाराज कह रहे हैं, आप सुनेंगे, प्रभुपाद जी को दंडवत करेंगे, ठाकुर के दंडवत करेंगे, फिर गुरुदेव के पास जाएंगे। तो पहला व्यक्ति जो दीक्षा ले योगेश प्रभु जी हैं, और आप सभी लोग जानते हैं योगेश प्रभु, मुझे इनका जो प्रशंसा है फोन में 3-4 बार मैं जब भी कॉल करता हूँ, वो इतना बड़े कर मैं बोले कहाँ मुझे अब खाना पड़ेगा इसके हाथ से। He's a very special cook. He's cooking for the organization, and he's a businessman with his good wife, and with his good wife, they are all businessmen. They stay in the town of Guru Maharaj. Very nice. And very dedicated. And with their daughter is there. She's the daughter. They have Laddu Gopal at home. Oh, really good. Yeah. Very nice family. They are from the business community, and they are taking initiation Guru Maharaj. Very nice. We met yesterday. Yeah. Guru Maharaj बहुत प्रसन्न है आपके ऊपर. Very nice. Okay. Okay. You want to give the mala? Okay. Yes. So you can sit. Beto. Oh. So, what are the 4 regulated principles? English is all right? Yeah. Okay. What are the 4 regulated principles? No gambling, no illicit sex, no immediacy, and no intoxication.
if this was the Western world and they forgot intoxication, I would go like that. गुरु महाराज बोले जब नशा की बात है तो वेस्टर्न हमारे तो वो भूल जाते तो मैं ऐसे करती Then they would understand it's तुरंत समझ जाए कुछ बोलेंगे So how many rounds every day? 16. 16 rounds minimum every day. And if you can chant more in Ekadasi, it's good. So you get the beads with your right hand. So your name now is Yuga Dharma Das. Yuga Dharma Das Deva. So Yuga Dharma refers in Kali Yuga to Lord Chaitanya Krishna Nam Sankirtan. गुरु महाराज ने उनका नाम गुरु महाराज ने उनका नाम युग धर्मधरा योगेश युग धर्मदास जो चैतन्य महाप्रभु लाया इस युग में स्वयं राधा रानी ला कर दिया दुनिया को हरि नाम संकीर्तन तो युग धर्म दास प्रभु के Next is Shailene. शालीन जी जो है मेरी पत्नी है और सहयोग देती है मेरे ख्याल से मैं जब आया हूँ मैं सब प्रोग्राम में उसको देखती हूँ and उसके बाद में she's in all the programs in the temple serving here she's I every Sunday she's there here with the daughter and the whole family in the midday whole day dedicate in the service it was very nice and they are here today taking initiation Guru Maharaj. Okay. Nilamawa. It's hot. Okay. What? Oh. Okay. Very nice. So, what are the four England principles? No intoxication, no gambling, no illicit sex, and no meat eating. Very good. And how many rounds every day? 16 daily and 25 in Ekadashi. Well, if you can do more, I don't absolutely require 25 on Ekadasi. It's just if you can do. And usually on Ekadasi, if I have nothing to do, I will chant 64. Guru Maharaj कहते हैं एकादशी के मैं 64 hours It's not that much Haridas Thakur chanted 3 lakhs of rounds a day. 3 lakhs of names. So, all right, you get the beads with your right hand. So your name now is Sri Vidya Devi Dasi. So that's the name of Lakshmi. Vidya means knowledge. Sri, of course, is the name of Lakshmi. So Sri Vidya Devi Dasi Ki Jai. हरिबोल आज से आपका नाम है श्री विद्या श्री तो लक्ष्मी के प्रतीक है विद्या ज्ञान से भरपूर तो उनका नाम दिया गया गुरु महाराज ने श्री विद्या देवी दासी के Okay, next is Miklesh. मिथिलेश प्रभु जी और मिथिलेश प्रभु गुरु महाराज you are sitting on the altar that the seat Vyasasana is being made by him the whole asana The whole asana. when you're sitting Very nice. he's a philosophy and he's Much better than the other one. He's a very dedicated and very strong and got a lot of talents within himself. Yeah, the old one used to fall apart very quickly. It was very unsteady. I was nervous on the other one. This is very nice. He's coming all the way from Vidimoli. Oh. There is no restriction like he got love for Krishna. He comes all the way from Vidimoli and does his good service. Okay. Hare Krishna. And after him is Usha. After him is Usha. Okay. Thank you. Thank you. So you can sit. Wait though. So what are the 4 regulated principles? No intoxication, no gambling, no meat eating, no for example, wishes. Yeah. No illicit sex. Okay. And how many rounds do you chant every day? 16 rounds minimum. And if you can, chant more in Ekadasi. So you get the beads with your right hand. Right hand. So your name now is Maharam Das. Maharam Das Ki Jai. I think everybody knows what that means. Hare Krishna उनका नाम आज से महाराम दास की जब भी रामनवमी रही कोई आए जाने नहीं प्रभु Hare Krishna.
और उषा माता जी जो है रासा मित्र, his husband is already initiated Gurudev. Right. So the wife is now ready for initiation. Good. And they are all the way from Tamia. They come all the way from Tamia, Wow. which is about 20 kilometers from here. Very sincere devotees, Rasa Mitra. And now Usha Mataji is ready to take initiation. Very nice. I think their elder son, I think, passed away very Oh. young. And Jai Jagdish Prabhu and he did program. And Rasa Mitra they were very disturbed. They were very happy to remain Krishna conscious, both of them. So Krishna is taking care of your eldest son. How old was he when he passed away? 25? Oh my God. Yeah, Krishna is taking care of you. Because your devotional service, Krishna will take care of it personally. आपकी भक्ति से आपका बेटा को तरन तारण। All right. 4 regulated principles. Okay. And how many rounds? 60 rounds minimum. And more in the Kasi if you can do that. So get the beads with your right hand. Your name now is Tulsi Prema Devi Dasi. Tulsi Prema Devi Dasi ki jai. माता जी का नाम से तुलसी प्रेमा, तुलसी प्रेमा देवी दासी की जय। That's a nice name, isn't it? All names are All the names are nice. और श्री विद्या, ट्रांसेंडेंटल विद्या, युग धर्म वही वही। That's why you have to give me the time to choose the name, not the last minute. Yeah, but they are beautiful. Yeah. Yeah. So next is Jitendra. और जितेंद्र प्रभु उसकी बीवी दोनों जन जी जितेंद्र प्रभु जो है अकाउंट बिजनेस है, होका बिजनेस है और मैं सच्चे कहता हूँ इनका मटर खा लोगे अब सब मटर बोले बहुत अच्छा माता जी और लोग दोनों बहुत अच्छे बिजनेस करते हैं और ये लोग they've been for a long time, maybe when I was here 8 years back they were Really? supposed to take initiation 8 years ago. when I was here they were supposed to take that time What happened? bit of so, Yeah. So they came back there again. Very nice. And they are from Korobesi, South Sabu, the mountain there. Oh. Very nice. Thank you. Very good. Thank you. Very hard, dedicated, sincere. Okay, so Jitendra, English okay? Okay. What are the 4 regulated principles? Okay. No kava. So, how many rounds can do rounds? Yeah, whatever you can do on the Kadasi. So, your name now, you get these with your right hand, is Jiveshwara Das. Jiveshwara Das ki jai. Jiveshwara means the Ishwara, control over all the jivas, that's the name of Krishna. Jiveshwara Das ki jai. प्रभु जी का नाम है जीवेश्वरा, जीव के जो ईश्वर है, जीवेश्वरा। तो जो जीव के ईश्वर है कृष्ण भगवान है, उनका नाम आज से रहेगा जीवेश्वरा दास प्रभु के। Next is Kusum Mata. माता जी उनकी पत्नी है जो अपने पति को पतिव्रता Okay, दिखाती Hare है, Krishna. सेवा करती है, सब जगह पे वो खड़ा रहती है सेवा करने के लिए। Thank you. Okay, very good. So, English or? English or? हाँ, जो जी हिंदी जो जी Okay. 4 regulated principles, Chai? No. हाँ हिंदी हिंदी Okay, 4 regulated principles. It's Chai principles. हाँ चार पाठ्यां नहीं करेंगे 16 hours. No. No मीट फिश No टैक्सीज meat and fish. no matsya, No. no mamsa, no madan. Is that right? No kava. What else? और बच्ची क्या What? How do you say illicit sex? आधार्मिक स्त्री पुरुष No adharmic stri purusha. How do you say no gambling? जीवन
Jiwa. No Jiwa. जुआ है Jivane. Jivane. So, how many rounds? Get no rounds? 16. Okay, very good. So your name now, get the beats, right hand, is Kanya Kumari Devi Dasi. It's a very nice name. या इसका नाम आज से आप सभी लोग जानते हैं कि वे all of you कन्याकुमारी देवी दासी की जय पार्वती श्लोक कन्याकुमारी Yes, Parvati. It's a very, one of the most famous temples in India is called Kanya Kumari Temple. गुरु महाराज कह रहे इंडिया भारत के बहुत ही फेमस विख्यात मंदिर है कन्याकुमारी एकदम नीचे इंडिया के एकदम नीचे You went there or this time? No, last time you went there. So, yes, Parvati, who is also called Vaishnavi, she's the great devotee of Krishna. पार्वती गुरु महाराज कह रहे वो वैष्णवी हैं जो कृष्ण भगवान के प्रिय भक्ति हैं Okay, so I think we got everybody, right? One more. Oh, one more. What do we miss? Let's see. Oh, ठीक है that's right. अश्विन Almost Ashwin, I forgot. अश्विन जी जो है एक टेक्नीशियन है और अकाउंट बिजनेस है और मोबाइल साउंड सिस्टम डीजे ये सब करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स he repairs the mobiles and he's a DJ he's got multiple art He's a DJ. yes, He can be a DJ for Krishna. but DJ for Krishna not for the DJ It's professional. Professional DJ. जी Nightclub? What's that? if it's nightclub then you wouldn't be here No nightclubs here in Mombasa. Right? no they have They're even building a movie theater here, right? yeah they are very huge they are ready to spoil The spoiled Mombasa. they have taken oath they will not spoil us Yeah, bring Kali here. So, English is okay? English. Okay. What are the 4 regulative principles? Cup, another alcohol. Yeah. What? No what? Cards. Cards. Well, you can play cards, but just don't gamble. Yeah, no gambling. Last one is Illicit sex. Good. And so, how many rounds every day? 16 rounds every day. If you can, jam more at Ekadasi. So your name now is also a very special name for the Ramayan. You get the beads with your right hand. Right hand. Is Agastya Muni Das. Agastya Muni Das ki jai. So he's a very special जी Muni from the Ramayana. गुरु महाराज ने इनका नाम रामायण से लिया है और इनका नाम बड़ा सुंदर नाम है अगस्त मुनि ठीक है शिव मुनि अगस्त मुनि का आश्रम आया था कथा सुनने के लिए आप लोग की यही आश्रम जाते हैं What'd you say? Lord Shiva went to Agast Muni to hear the katha Yeah. so you people have to come to him to hear the katha And Agastya Muni, wasn't he the one who drank up the ocean? yes. He drank up the ocean because the demons were in the ocean, Yes. and so the demigods could conquer them. Yes. And Agastya Muni, he actually had good digestion, so there's 2 demons, Uvala, and what is the other one's name? There was 2 demons who actually tried to trick people by having one of them eat the demon who took the form of a ram. You remember that story? And then he would come out of the person's stomach but then Agastya Muni digested him. Yes. Interesting. गुरु महाराज ने क्योंकि वो सागर में दानव देखा ये तो पी लिए वरना वो रहेंगे तो कितना उपद्रव मचाएंगे तो उनकी कथा है अगस्त मुनि का रामायण में सुंदर कथा सबको जानना चाहिए He also caused the mountains to shrink. Yeah.
Anyway, we're not going to tell the whole story. Okay, so you can continue with the fire sacrifice. All glories to His Divine Grace, Srila Prabhupada, Srila Prabhupada ki jai. Whoops. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Okay, we're going to sign off now. Nice to see you all online.